Krishna. That's good. No, just where it is.
Satacharya Ashtottara Shri Srimad A.C. Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai, ISKCON Samsthapak Acharya Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Prem Sakaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Sri Sri Radha Krishna Gopinath Shyam Radha Kunti Govardhan Ki Jai, Vrindavan Dham Ki Jai, Navadip Dham Ki Jai, Jagannath Puri Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Jaman Mai Ki Jai, Tulsi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. Go Premanande. Can they do that work quietly? Can they do that work quietly? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 7th Canto, 120. Katam tasmin Bhagavati Duravagrahya Dhamani Pashyatam Sarvalokanam Layam Yatur Anjasa Katam Tasmin Bhagavati Duravagrahya Dhamani Pashyatam Sarvalokanam Layam Yatur Anjasa Katam Tasmin Bhagavati Duravagrahya Dhamani Pashyatam Sarvalokanam Layam Yatur Anjasa Ladies.
शब्दानुवाद हिंदी में। कथम कैसे तस्मिन उसमें भगवती पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दुर्लभ ग्राह्य प्राप्त करने में कठिन धामनी जिसका स्वभाव पश्यताम देखते देखते सर्व लोकानाम सारे लोगों के लयम कीयतु लीन हो गए अंजसा सरलता से। I'll read it also because other people may. How is it possible for Shishupal and Dantavakra, in the presence of many exalted persons, to enter very easily into the body of Krishna, whose nature is difficult to attain? अनुवाद, यह कैसे संभव हो पाया कि शिशुपाल तथा दंतवक्र अनेक महापुरुषों के देखते देखते ही उन कृष्ण के शरीर में सरलता से प्रविष्ट हो सके, जिन भगवान की प्रकृति को प्राप्त कर पाना कठिन है। Purport. Shishupal and Dantavakra were formerly Jai and Vijay, the doorkeepers of Vaikuntha. Merging into the body of Krishna was not their final destination. For some time they remained merged, and later they received the liberations of Sarupya and Salokya, living on the same planet as the Lord, in the same bodily form. The Shastras give evidence that if one blasphemes the Supreme Lord, his punishment is to remain in hellish life for many millions of years more than one suffers by killing many Brahmanas. Shishupal, however, instead of entering hellish life, immediately and very easily received Sayuja Mukti. That such a privilege had been offered to Shishupal was not merely a story. Everyone saw it happen. There was no scarcity of evidence. How did it happen? Maharaj Yudhisthira was very much surprised. काफी बड़े शिशुपाल तथा दंतवक्र पूर्व जन्म में वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय थे। उनका अंतिम लक्ष्य कृष्ण के शरीर में लीन होना नहीं था। वे कुछ काल तक लीन रहे, किंतु बाद में उन्हें प्रभु के लोक में रहने तथा उन्हीं के समान कायिक रूप प्राप्त करने अर्थात सारूप्य तथा सालोक्य मुक्ति प्राप्त करने का अवसर मिला। शास्त्र साक्षी है कि यदि कोई परमेश्वर की निंदा करता है तो उसको अनेक ब्राह्मणों का वध करने वाले व्यक्ति से भी कहीं अधिक लाखों वर्षों तक नारकीय जीवन बिताने का दंड दिया जाता है। किंतु शिशुपाल को नारकीय जीवन में प्रवेश नहीं करना पड़ा। वह तो तुरंत ही सरलता से सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। शिशुपाल को ऐसा सुअवसर दिया जाना पूरी कथा नहीं है। वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने इसे देखा, अतएव साक्ष्य की कमी नहीं है। किंतु यह हुआ कैसे? महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चकित थे। Om Jnanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Jena Bhutale
Swayam Rupakala Mahyam Tadhati Shapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Jatapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Shagrashatam Sahagana Raghunathan Vitam Stam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Pradijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kamshana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kolpatarubhyascha Kripa Sindho Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Katam Tasmin Bhagavati Durvagraya Tamani Pashyatam Sarvalokanam Layam Yatur Anjasa. The Maharaja Yudhishthira wanted to understand the mystery of this event. महाराज युधिष्ठिर इस घटना के रहस्य को समझना चाहते थे. People are generally, an intelligent person is naturally inquisitive. जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं तो उनके अंदर जिज्ञासा की भावना होती है. But generally they're inquisitive about useless things. लेकिन वो कोई अनुपयोगी विषयों के प्रति जिज्ञासु होने का प्रयास करते हैं. They're curious about politics, they're curious about sports, they're curious about finance, they're curious about business. वो उत्सुक होते हैं जानने के बारे में खेलों के, राजनीति के और अन्य अनुपयोगी विषयों के. They're curious about science. विज्ञान के बारे में जानने के उत्सुक होते हैं. But they're not curious about the personality of Godhead. लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में जानने की उनकी उत्सुकता नहीं होती है. Because Duskriti, they have a background of impious activities and therefore not interested. क्योंकि उनके पूर्व जन्मों में किए गए पाप कर्म होते हैं, इसीलिए वो भगवान के प्रति जानने की जिज्ञासा नहीं रखते हैं. But a fortunate person or a pious person will naturally be interested. लेकिन अगर कोई व्यक्ति सौभाग्यशाली है अथवा पुण्यवान है तो उसका स्वाभाविक प्रकृति होगा भगवान के बारे में जानने की. Chaturvida bhajante mam jana sukritinorjan artho jigyasur artarti gyanicha paratarsha. When curious or in looking for knowledge, or when in distress or in need of money, a fortunate person approaches the personality of Godhead. जब कोई व्यक्ति जिज्ञासु हो, धन की तलाश में हो, ज्ञान की तलाश में हो, तो ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति भगवान की ओर अग्रसर होता है. Of course, Maharaja Yudhishthira was more than just a pious person. He was an exalted devotee of Krishna's. निस्संदेह महाराज युधिष्ठिर पुण्यात्माओं से भी उच्चतर अवस्था में थे. वह भगवान के विषय में जानने के इच्छुक थे. And therefore he was naturally eager to know
about how this could have happened. इसीलिए महाराज युधिष्ठिर स्वभाववश ये जानना चाहते थे कि यह किस प्रकार संभव हो सका. Layam Iatur Anjasa, the Shishupal very easily merged into the body of Krishna. शिशुपाल बहुत ही आसानी से भगवान के शरीर में विलय हो पाया. Generally, this is the aim of the Gyanis. ज्ञानी व्यक्तियों का सामान्यतया यही उद्देश्य होता है. Or sometimes the yogis. और कभी-कभी योगियों का. They want to merge into the existence of the Lord. वो भगवान के अस्तित्व में विलय होना चाहते हैं. And that's very difficult. और ये बहुत कठिन है. Klesho dikatadastesham avyakta sakta chetasam. Avyakta hi gatir dukkam deyavadbir avapite. In the 12th chapter of Bhagavad Gita, the Lord says that for someone to fix his mind on my impersonal feature is very difficult. भगवान भगवद गीता के 12वें अध्याय में बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के अव्यक्त रूप पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहे तो यह अत्यंत कठिन है. But that's what the impersonalist philosophers have to do. और यही ऐसा कार्य है जो कि निराकारवादी वैज्ञानिकों को ऐसा करना पड़ता है. Somehow fix their mind on the impersonal feature of the Absolute. किसी भी प्रकार भगवान के निराकार स्वरूप के ऊपर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है. And ultimately, when they attain perfection, after so much difficulty, they can merge into the Supreme. और जब वो इस प्रकार अपना सिद्धि प्राप्त करते हैं भगवान के निराकार स्वरूप पर वो विलय होते हैं तो ये बहुत कठिन उनके लिए कार्य है. That's, what is that? Ye tu sarvani karma. Let's see. Ye tvaksharam manirdesham avyaktam paryupasate sarvatragam achintyam cha kutastam achalam dhruvam sanniyam yendriya gramam sarvatra sammabuddhaya te prapnuvanti mam eva sarvabhuta terita. The impersonalists can attain what their goal is, aksharam, anirdesham, avyaktam, that which is inexhaustible, indefinite or not expressible in words, unmanifest. तो जो निराकारवादी हैं वह भगवान के अक्षर रूप, भगवान के जो कभी समाप्त नहीं होने वाला रूप है, इस प्रकार के रूप में वो विलीन होने का प्रयास करते हैं. Aksharam मतलब arupa. अरूप. Avyakta and sarvatraga, all pervading, and achintya, inconceivable. Achalam, so many ways, this impersonal absolute is their target. कई प्रकार से जो निराकार भगवान का निराकार स्वरूप है उसका कई प्रकार से वर्णन किया गया. To attain that impersonal absolute, saniyam yendriya gramam, they have to completely control their senses. तो अगर भगवान के इस निराकार स्वरूप को प्राप्त करना है तो अपनी इंद्रियों पर संयम रखना होगा. Sarvatra samabuddhaya, and attain complete equanimity of mind. और मन का पूरी तरह से स्थायित्व आवश्यक है. Then te prapnuvanti, then they can obtain this perfection. और तब इस पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है. Klesho adhikuttarastesham avyakta sakta chesa, with great difficulty. और बहुत अधिक कठिनाई के साथ इसको प्राप्त करना पड़ता है. But here, Shishupal Anjasa very easily attained that same perfection. तो वही पूर्णता शिशुपाल ने यहाँ पर बहुत आसानी से प्राप्त कर ली.
And those who attain that perfection through the yoga system or meditation, they're very pious souls. They've undergone so much tapasya. They're, saniyam yendriya gramam sarvacha, and sarvabhuta hate rata. They're engaged in activities for the benefit of everyone. तो जिन्होंने योग और ध्यान के द्वारा इस प्रकार की पूर्णता प्राप्त की है, वो बहुत ही पुण्यात्मा हैं, उन्होंने बहुत अधिक तपस्या की है। Then such exalted persons may attain the impersonal absolute. तो ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी अधिक तपस्या की है, तो ये हो सकता है कि प्राप्त कर पाएं। But Shishupal wasn't pious. लेकिन शिशुपाल तो वो पुण्यात्मा नहीं था। He was a demon. वो तो राक्षस था। And he was always blaspheming Krishna. और हर समय भगवान की बुराई करता था। To lack piety is one thing, but he was so obnoxious that he couldn't stand the idea that Krishna would be glorified. तो पुण्यात्मा नहीं होना यह एक प्रकार की बात है, लेकिन शिशुपाल तो इस तरह का दुरात्मा था कि वह कृष्ण की प्रशंसा सुन ही नहीं सकता था। That means envious. इसका मतलब है कि वह भगवान से ईर्ष्यालु था। Why should Krishna be honored first? वो ये विचार रखता था कि कृष्ण का सम्मान सबसे पहले क्यों होना चाहिए? Anyone else? There's so many great men here, Bhishma and Vyasadeva, and so many. Why this cowherd boy, this person that nobody even knows his caste, this, in so many ways, unqualified person? तो शिशुपाल ये बोल रहा था कि यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े योद्धा हैं, भीष्म देव हैं, व्यास देव हैं, और भी काफी लोग हैं, लेकिन ये ग्वाल वाले भगवान श्री कृष्ण, इनका सम्मान सबसे पहले क्यों होना चाहिए? It was unbearable for him that Krishna would be honored first. तो यह उसके लिए असहनीय बात थी कि कृष्ण का सम्मान सर्वप्रथम हो रहा था। That's envious. ये ईर्ष्यालु व्यक्ति का लक्षण है। So how is it that this envious person, who was always speaking ill of Krishna, so easily attained perfection? तो यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि किस प्रकार एक ईर्ष्यालु व्यक्ति जो कि हर समय भगवान के बारे में निंदा करता था, वह पूर्णता को प्राप्त कर पाया। And someone may say, no, he didn't really attain perfection, that's just a story. और कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि उसने वास्तव में पूर्णता प्राप्त नहीं की, यह तो एक कहानी मात्र है। But Yudhishthira Maharaj says, we all saw it. We all saw it. लेकिन युधिष्ठिर महाराज ये बताते हैं कि दरअसल हम सबने प्रत्यक्ष ये देखा। Prashyatam sarvalokanam. Everyone saw that he merged into the body of the Lord. तो ये वर्णन आता है कि हर किसी ने देखा कि वह भगवान कृष्ण के शरीर में समाहित हो गया। And Krishna is Duravagraya Dhamani. To attain Krishna's nature is very difficult. और भगवान का प्रकृति प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना ये बहुत अधिक कठिन है। So Katam, how is it possible? तो यह कैसे संभव हो पाया? These were his questions. तो ये महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न थे। That will be explained by Narada Muni. तो नारद मुनि के द्वारा इनका विवरण, इनका उत्तर दिया जाएगा। Katam tasmin Bhagavati. He merged into the body of Bhagavan, the personality of Godhead. वह भगवान के शरीर के अंदर समाहित हो गया। So how could it happen? लेकिन ये कैसे संभव हो पाया? Yes. Of course, as Prabhupada explains, even this impersonal liberation was not his ultimate destination.
तो श्रील प्रभुपाद ये वर्णन करते हैं कि जो निराकार ब्रह्म की प्राप्ति है वह पूर्णता नहीं है। He was originally a devotee, तो वैसे तो Shishupal. शिशुपाल तथाकथित रूप से भक्त था। Shishupal, Dantavakra, they had been Joy and Vijay, the gatekeepers of Vaikuntha. शिशुपाल और दंतवक्र भगवान कृष्ण के दरबार में द्वारपाल थे, जय और विजय। So first they appeared to merge into the Lord, but later they resumed their service as doorkeepers. तो शुरुआत में तो वो भगवान के शरीर में समाविष्ट हो गए, किंतु बाद में द्वारपाल के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं आरंभ कर दी। It's implied that the destination of merging into the Lord is as good as the destination of the asuras. तो यहाँ पर इस बात का अर्थ है कि भगवान के शरीर में समाविष्ट होना यह उतना ही अच्छा है जिस प्रकार असुरों का भगवान के शरीर में समाविष्ट होना। After undergoing through so much trouble, the impersonalist philosophers achieve the same destination as the demons. तो जो निराकारवादी विद्वान हैं वो भी वही गति प्राप्त करते हैं जो कि असुरों को प्राप्त होती है। Therefore, Kaivalyam Narakayate, Srila Prabodhananda Saraswati says that this destination to merge in the body of the Lord is actually hellish. तो इसलिए श्री प्रभुपाद सरस्वती इस बात का वर्णन करते हैं कि भगवान के शरीर में इस तरह से समाविष्ट होना ये वास्तव में एक नारकीय स्थिति का वर्णन है। Someone who blasphemes the Lord enters hellish life. जो व्यक्ति भगवान के बारे में निंदा करता है वह नारकीय जीवन में प्रवेश करता है। But here the impersonal liberation is also hellish life. यहाँ पर जो निराकार ब्रह्म में समाहित होना ये भी नारकीय जीवन की तरह है। Because there's no opportunity to serve the personality of God. क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौका नहीं मिलता भगवान की सेवा करने का। Therefore, in the eyes of the devotee, that kind of mukti, sayuja mukti, is naraki, hellish. इसलिए भक्तों की दृष्टि में ये सायुज्य मुक्ति नारकीय है। The devotee wants to serve the Lord in a particular loving relationship. भक्त भगवान की सेवा एक विशेष प्रकार के प्रेममयी संबंध के साथ करना चाहते हैं। But in the impersonal liberation, there's no service. लेकिन निराकार में समाहित होने से वहाँ पर कोई भी सेवा का मौका नहीं मिलता। There's not even an individual to render service. तो किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सेवा करने का भी मौका नहीं मिलता। Their idea is that the knower and the known are realized as one. Their idea is that the knower and the known are to be realized as identical. तो जो विचार है ये और ज्ञाता का वो एक समान है। Because their experience of individuality in this world is painful. They want to avoid that pain by avoiding individuality. तो वहाँ पर अपनी व्यक्तिगत पहचान खोना ये बहुत कष्टकर होता है, तो वो इस पहचान को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। The patient is suffering, so we'll solve the suffering by killing the patient. Or the patient himself solves the problem by committing suicide. तो अगर कोई मरीज अपने आप की हत्या कर लेता है और सोचता है इससे कष्ट की मुक्ति हो जाएगी, तो ये गलत है। You get rid of the suffering, but you get rid of everything. तो हो सकता है कि आत्महत्या करने से कष्ट समाप्त हो जाए, शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाए, लेकिन उस समय सब कुछ भी खत्म हो जाएगा। There's an expression in English, throwing the baby out with the bath water.
तो एक अंग्रेजी में कहावत है कि जो नहाने वाला पानी है उसके साथ में बच्चे को भी फेंक देना। You bathe the baby and then you throw out the water. But someone throws out the water and throws out the baby also. जब हम बच्चे को नहलाते हैं तो पानी को बाहर फेंक देते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि बच्चे को भी साथ में पानी में फेंक दे तो ये विशेष बात है। So they want to get rid of the contamination and suffering of this material world, but in the process they get rid of themselves also. तो वास्तव में इस संसार के जो भी दूषण है और इस संसार की जो भी समस्याएं हैं, जो कष्ट हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वो अपने आप को भी समाप्त कर लेते हैं। Therefore, their mentality is described as hellish. तो इसलिए इस प्रकार की सोच को नारकीय सोच के बारे में बताया गया। So Yudhishthira Maharaj was inquiring about this great mystery, how Shishupal so easily attained this liberation that's sought after by the Gyanis. तो युधिष्ठिर महाराज इस रहस्य को समझना चाहते हैं कि किस प्रकार ये जो ज्ञानियों को गति मिलती थी वो गति शिशुपाल को भी प्राप्त हो गई। And the answer will unfold in coming verses. और इसके बारे में और अधिक जानकारी रहस्य उद्घाटन होगा अगले श्लोकों में। Hare Krishna. Any questions? अनुवाद कीजिएगा। हम दास्य रस के लिए उदाहरण में हनुमान जी वगैरह भक्त का नाम लेते हैं, तो शांत रस के लिए भी कोई भक्त या तो कोई है शांत रस का कोई उदाहरण? He is telling that when we discuss about dasya ras, so we take example of Hanuman. So what about example in case of Shanta rasa? In Shantaras, the examples are the Shanakari Rishi, four Kumaras, the four Kumaras, and Shonakari Rishi also, the sages of Naimisharanya, they're given as examples. But especially Shonakari Rishi, the four Kumaras are given as examples of Shantaras. तो सनक आदि जो ऋषि हैं, चार कुमार और सौनक आदि ऋषि, ये शांत रस में बताए जाते हैं, विशेष रूप से चार कुमार। Or in the spiritual world, the grass, the trees, the cows, they're just there, they're passively available to Krishna for his pleasure, but they don't actively come forward to serve. तो इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में घास, पेड़, गाय इत्यादि जो कि सक्रिय अवस्था में भगवान की सेवा उतनी नहीं करती है, बल्कि थोड़ा सा निष्क्रिय अवस्था में होती है, तो वो भी शांत रस में। Of course, the cows, they come to lick Krishna's body, but the grass, they're just there for Krishna to walk on. तो जो गाय है वो तो दरअसल भगवान के शरीर को चाटने के लिए आती है, लेकिन अगर घास के बारे में बात करें तो घास सिर्फ भगवान का दर्शन करती है। Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Why did Shishupal Dadvak have to emerge into the feet of Krishna first and then to Jai Vijay? Why didn't they become Jai directly? Should I explain or? Yeah, I can't speak Hindi, so you have to. तो इनका प्रश्न है कि क्यों शिशुपाल और दंतवक्र को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहले शरण लेनी पड़ी, वो सीधे सीधे जय और विजय क्यों नहीं बन गए? विलीन हो गए पहले उनके चरणों में विलीन हो गए, फिर जय विजय बने। हाँ, फिर जय विजय बने। Yeah, actually, he's the right person to ask it in Hindi. First thing is, Krishna wanted it that way. तो पहली बात है कि भगवान कृष्ण इसी प्रकार से इस घटना को होने देना चाहते थे। Krishna could have promoted them immediately back to the position of doorkeepers. भगवान चाहते तो उनको सीधे सीधे भी उनके द्वारपाल के रूप में उनको सेवा दे सकते थे। But this is his pastime. लेकिन ये भगवान की लीला है, इस दृष्टि से समझना चाहिए। One thing Krishna is showing, that just see this
business of merging with my body is as good as the business of the demons. तो एक बात जो भगवान यहाँ पर समझाना चाहते थे वो ये है कि दरअसल उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाना यह वैसा ही है जो कि राक्षसों को जिस प्रकार की मुक्ति मिलती है उस प्रकार की मुक्ति व्यक्तियों को मिलती है। Something else? Then after that program, they again took the they again came to us in the form of Jayadvaita. I can't hear you at all. Like I was telling that after the killing of Shishupal, they again came as Jayadvaita. Yeah, we hear these things. So what was the pastime? Like because they were actually got that curse of I think 3 demonic births by the fourth one. Indeed. Should I? Your choice. तो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि जो शिशुपाल और दंतवक्र थे वो अगले जन्म में जय और विजय बनकर जगाई और मथाई बनकर आए, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो इस घटना के बारे में वो प्रश्न पूछता है। Everything was complete in 3 births. दरअसल हर एक चीज जो उस श्राप से संबंधित थी वह 3 जन्मों में पूरी हो गई थी। They were restored to their position. और वो वापस अपने स्थान पर पहुंच चुके थे। But for Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, the devotees also appear in different roles. तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग लेने के लिए विभिन्न प्रकार के भक्त अलग-अलग रूपों में प्रकट हुए। Brahma appears as Thakur Haridas. ब्रह्मा हरिदास ठाकुर के रूप में आए। And so many devotees appear. और कई सारे भक्त यहाँ पर प्रकट हुए। So Jai and Vijay also appeared. इसी प्रकार जय और विजय भी यहाँ पर प्रकट हुए। For the glory of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के यश का विस्तार करने के लिए। The Lord is glorified by the demons also. तो भगवान की स्तुति राक्षसों के द्वारा, असुरों के द्वारा भी की जाती है। The demons make the glories of the Lord manifest. तो जो भगवान के विषय में उनका जो लीलाएं हैं या भगवान का प्रसिद्धि वो और ज़्यादा बढ़ती है जब असुर उसमें भाग लेते हैं। Without Kamsa, Krishna's birth would have been very ordinary. जब अगर कंस को अगर हम हटा दें तो कंस के बिना भगवान श्री कृष्ण के क्रियाकलाप बहुत सामान्य लगेंगे। Of course, more than ordinary, but so much was manifest thanks to Kamsa. तो भगवान के जो क्रियाकलाप है कंस के बिना भी सामान्य से कुछ अधिक ही लगते, लेकिन भगवान के जो बहुत सारे लीलाएं हैं वो कंस के माध्यम से प्रकट हुई। The Lord, so much of the Lord's glory is revealed thanks to Hiranyakashipu. तो भगवान की महिमा के बारे में बहुत अधिक पता चला, उसके लिए हिरण्यकशिपु को धन्यवाद देना चाहिए। Varahadev, who was the demon's name? Hiranyaksha. Thanks to Hiranyaksha. वराहदेव की महिमा हम जानते हैं, उसके लिए हिरण्याक्ष धन्यवाद के पात्र है। So these demons all help bring out the glories of the Lord. तो इन असुरों के माध्यम से भगवान की महिमा ये प्रकट हुई। Just like sometimes you'll see in the jeweler's shop, they're having some diamond ornament, and behind that diamond ornament there's like a deep blue background or a bright red background, so that the ornament becomes more prominently seen. तो जब हम आभूषणों की दुकान में जाते हैं तो वहाँ पर कई बार देखते हैं कि जो हीरे जवाहरात की कुछ भी ज्वेलरी है या फिर सोने के आभूषण हैं, तो उन आभूषणों के पीछे गहरे नीले रंग की एक बैकग्राउंड होता है। इस बैकग्राउंड के माध्यम से वो ज़्यादा सुंदर लगते हैं। So the demons bring out the glories of the Lord. तो जो असुर हैं वो भगवान की महिमा
को और अधिक प्रकाशित करते हैं। And of course the devotees bring out the glories of the Lord. और निस्संदेह भक्त भी भगवान की महिमा को प्रकाशित करते हैं। The Lord appeared more for Prahlad than for Hiranyakashipu. तो भगवान प्रहलाद के लिए विशेष रूप से आए, ना कि हिरण्यकशिपु के लिए। But these, so in the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, these devotees and supposed demons also appear, so that the Lord will be, the glories of the Lord will be manifest. तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में बहुत सारे भक्तों के साथ साथ असुर भी आए, जिससे भगवान की लीलाएं और अधिक महिमा मंडित हो पाए। Dina hina yatachilo harinam udharila. It said that Chaitanya Mahaprabhu uplifted all the fallen souls. तो ये वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु ने जितने भी पतित जीवात्माएं हैं उन सबका उद्धार किया। All right, that's a theoretical statement that Chaitanya Mahaprabhu, he's patita padana, patita udharan, he uplifts the fallen souls. तो ये सैद्धांतिक रूप से हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है। But what is the evidence? लेकिन उस घटना का प्रमाण क्या है? Tar sakshi Jayadvaita. The evidence is just see how these two degraded brothers were delivered. तो भगवान के इस विशेष गुण के साक्षी हैं जगाई और मदाई की, भगवान ने जिस प्रकार के उन पतित जीवात्माओं का उद्धार किया। So they perform a valuable service. They provide the evidence. तो जगाई मदाई ने बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा की भगवान ने, उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, प्रमाण साक्ष्य प्रस्तुत किया। There are 4 yugas, Satyug, Treta, Dwapar, Kalyug. In this Chatur-yuga, Jai Vijay came as a Hiranyakashipu and Ravan, Dandavak and Shishupal. The next Chatur-yuga, again same Jai Vijay will come in the pastimes of Lord, or he will commit same mistake. तो इनका प्रश्न है कि इस चतुर्युग में जय विजय आए हिरण्यकशिपु, रावण इत्यादि के रूप में, और बाद में जगाई मधाई के रूप में भी आए। तो क्या अगले चतुर्युग में फिर से जय विजय जगाई और मधाई के रूप में आएंगे? हिरण्यकशिपु के रूप में भी आएंगे, रावण के रूप में और जगाई मधाई के रूप में भी आएंगे। If Krishna desires. तो अगर भगवान चाहेंगे तो आएंगे। He can send the same group, the same team, or he has big enough entourage, he can send someone else also. तो भगवान चाहे तो उसी ग्रुप को, उसी समूह को फिर से भेज सकते हैं, और चाहे तो एक नया समूह भेज सकते हैं। You want to meet them? क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? Something else? We see that Sukadeva Goswami initially he didn't want it to come out of the womb because of understanding the position of Maya. But then later we see in the Bhagavatam that initially he had attraction for the impersonal feature of the Lord. How is it? तो इनका प्रश्न है कि सुखदेव गोस्वामी जब अपने माता के गर्भ में थे तो माया के डर से, माया के प्रभाव में आने के डर से अपनी माता के गर्भ से बाहर ही नहीं निकलना चाहते थे। लेकिन ये वर्णन है कि जब उनका जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद वो निर्विशेषवादी बन गए। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? This is the initial stage. Even if one may be attracted by the pastimes of the Lord and still be in the first list. तो ये बहुत ही प्राकृतिक बात है कि अगर कोई व्यक्ति हो सकता है भगवान की लीलाओं को सुनता रहे फिर भी वो निराकारवादी या मायावादी बन सकता है। There are so many Mayavadis. Aham Brahmasmi gets so boring. They become attracted to the pastimes of Krishna. तो बहुत सारे मायावादी हैं जो भगवान की बहुत सारी लीलाएं सुनने के बाद भी मायावादी बने रहते हैं।
Yes. So, but if someone is attracted to the pastimes of the Lord, then he can't stay an impersonalist. He becomes attracted. लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं से और भगवान के दिव्य रूप से आकर्षित हो जाता है, तो लंबे समय तक वह निराकारवादी या मायावादी नहीं बना रह सकता है। And Shukadev Goswami is the evidence. और सुखदेव गोस्वामी इस बात के प्रमाण हैं। Is that all right? Yes. In the explanation, you told that the impersonalists, their path of merging, although it's a bad destination, equivalent to hellish condition, but you said that in the slok, Lord Krishna told that they can completely control the senses and they engage in the welfare activities. But many a times in the purports, Prabhupada criticizes them, saying that although they tell themselves to be liberated, but they again come down to the standard of welfare activity. Krishna is saying that their path is welfare activity, and Prabhupada is criticizing that they fall down. So, how to understand this? तो प्रभु का प्रश्न है कि कृष्ण बताते हैं कि दरअसल वो निराकारवादी रास्ते पर हैं। आप बोलिए। निराकारवादियों के लिए जो कृष्ण भगवान रास्ता बताए हैं कैवल्य मुक्ति के लिए, कि वो इंद्रियों का पूर्ण निग्रह करके और दूसरों के लिए हितकर कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कई जगह तात्पर्य में कहते हैं कि जो व्यक्ति निराकार में प्राप्त हो चुके हैं लेकिन फिर भी वो नीचे गिर के फिर से तथाकथित सामाजिक क्रियाकलापों में लगते हैं, तो ये दोनों विरोधी लगते हैं, तो इसको कैसे? Sarvabhuta hite rita. The impersonalists are doing something for the spiritual welfare of others. तो जो निराकारवादी हैं वह सभी व्यक्तियों के आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। Not the highest spiritual benefit, still the spiritual benefit. वो हो सकता है सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ के लिए उनके लिए कुछ ना कर पा रहे हो, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं। Just by their example, giving up material life and pursuing the absolute, they're acting for the welfare of others. तो जिस प्रकार से वह इस भौतिक जीवन का त्याग करके वो बहुत सारी तपस्या करते हैं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं, तो दूसरों के हित के लिए करते हैं। Brahma Jigyasa, inquiring about the Supreme. ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं, पूर्ण पुरुष सुप्रीम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। But the impersonalists Prabhupada talks about are 10th rate impersonalists. They're 10th grade impersonalists. प्रभुपाद बताते हैं कि वो 10वीं श्रेणी के निराकारवादी हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं। They make a big propaganda, Brahma Satya, Jagan Nitya, the absolute is real, the world is false. तो वो निराकारवादी एक प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, एक प्रकार का विचार फैलाते हैं कि जो ब्रह्म है वह सत्य है और ये संसार मिथ्या है। And then what is their welfare work? To open hospitals to make the false world better. लेकिन उनका बाद में क्रियाकलाप कैसा होता है कि वो बाद में इस जगत को और अच्छा करने के लिए हॉस्पिटल इत्यादि खोलते हैं। Something for the body. शरीर के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। Jagan Mitta. If the world is false, certainly this body is false. And they open some charitable institution for the body. तो अगर जगत मिथ्या है तो फिर ये शरीर भी मिथ्या होना चाहिए, लेकिन वो कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं शरीर की अच्छाई के लिए। So if Jagan Mithya, तो आपका हॉस्पिटल मिथ्या भी। अगर जगत मिथ्या है तो हॉस्पिटल भी मिथ्या है। All right. Thank you all very much. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada.